रजिस्ट्रेशन कर दियो जल्दी। रश्मि रंजन कल रजिस्ट्रेशन। रश्मि रंजन रजिस्ट्रेशन कल। कालंदी चरण रजिस्ट्रेशन कल। तपस्विनी बेहरा रजिस्ट्रेशन कल। हेलो तपस्विनी। हेलो रश्मि रंजन शुभुची ना नहीं? रश्मि रंजन वॉइस क्लियर होची? देवाशीष वॉइस क्लियर होची? हेलो आज्ञा सर शुभुची सर क्लियर क्लियर ठीक है सर। अच्छा ओके। तपस्विनी रजिस्ट्रेशन कर दियो। मेसेज बॉक्स मझे जोटा अच्छी क्लिक करी रजिस्ट्रेशन कर। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है स्टार्ट करवा। और बहुत पिला रजिस्ट्रेशन करना दिन छाड़ जे न करिवो से प्रॉब्लम फेस करबो। ओके गुड इवनिंग टू ऑल लर्नर्स। गुड इवनिंग Good evening to all learners. That today we proceed to discuss and focus on MRD-2, Block 2, as very interesting and important block. Rural development concept, strategy, and experiences in the Indian context. Rural development concept, strategy, and experience in Indian context. So development, underdevelopment, developed countries, etc. You know, विभिन्न प्रकार देश पृथ्वी सबू विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र एवं विकास उन्मुखी राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र ओडिया रे कहा जाए। So developed countries, developing countries, underdeveloped countries are various concepts concerned with economic subject matters. So some part of the world belongs to developed countries, some part of the world belongs to developing country, and some part of the world belongs to underdeveloped countries. बहुत देश पृथ्वी रे अछंती जो माने संपूर्ण भाव रे डेवलप्ड कंट्री जो एडवांस्ड मॉडर्नाइज्ड कंट्री लाइक European countries, specifically United States of America, Britain, Germany, France, Italy, and some part of the eastern part like Japan, Australia, belongs to highly developed, modernized country. And eastern part, some of the countries like India and Bangladesh, like your Sri Lanka, belongs to developing country, underdeveloped like Pakistan, Myanmar. This is underdeveloped countries. So किछि देश developing बा विकास पथरे आगे चली छंती in every respect, from primary sector to secondary sector to tertiary sectors. The economy of the world is divided into three sectors, that is primary sector, secondary sector, and tertiary sectors or service sector. So primary sector एगरा सब मन रखिबो टिके पिला माने. So primary sector concern are included like the agriculture, animal husbandry, fisheries, and like allied activities and forestry. All these are the items included in your primary sectors because that provides the primary goods and services to the society to fulfill our primary wants. Then human wants belongs to comforts and luxurious we receive we get from secondary sector. Secondary sector includes industrial sectors and electricity department, etc. So we get that we fulfill the goods like industrial product like refrigerator, color television, motor vehicles, fan, and other electronics goods, etc. for comfortable life, to maintain comfortable, how to stay, and we get from industrial
or from industry. So electricity also provides us comfortable life. And thirdly, that service sector includes that services like general administration, law and order, judiciary, department of police, and like your banking sectors and transport system, insurance companies, all these are included in service sector. There is no production. So from these three sectors of economic in every sphere, that countries are USA, Britain, German, France are mostly developed in this respect. And the rich countries like capitalistic countries, America, Britain, German, France, highly modernized and industrialized countries. So that is why they are belong to the developed countries. ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ. So what is the real meaning of development? Development implies an overall positive change in the physical quality of life. Development implies, so ବିକାଶ କାହାକୁ କହିବା? ବିକାଶ କାହାକୁ କହିବା? That is implies an overall positive change in the physical quality of life. This positive change for the better encompasses economic as well as social aspects. Therefore, development not only calls for economic growth, but also the equitable distribution of gains made from economic growth. In other words, we can say again, development implies growth with social justice. Growth with social justice. That means there is positive change for the better economic life as well as social aspects. It means an improvement in the quality of life through better health, better education, better housing and overall material and social welfare. जो देश रे उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा एवं हाउसिंग एवं मटेरियल भौतिक द्रव्य इत्यादि एवं ओवरऑल सामाजिक मंगल साधन हेई थाए ताहाकु आमे विकासशील बा डेवलपमेंट विकास बोली ताकु कहिबा, गोटे देशर विकास बोली कहिबा. Development always respect to social justice and implies economic growth. So development focuses on some of the important points like removal of inequality and poverty. गोटे देशरू दारिद्र्य दूरीकरण करिबा, अर्थनैतिक असमानता को दूर करिबा, increase in material welfare of people, विभिन्न प्रकार आधुनिक मॉडर्नाइजेशन गुड्स सर्विसेस लोक माने पाई परथुवा दरकार, increase in social well-being कहले शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बासगृह इत्यादि एवं वाटर सैनिटेशन परिमल जोटा कहउचंदी ए गुडिक सबु लोक माने सुचारूपे पाउथिबा दरकार. an equitable distribution of gains, development among different groups of people in a region or country, then we can say it is the development. All these are the indicators of the development. And besides that, or apart from this, the economic growth also different from the development. It is necessary to understand that the concept of economic growth. So development aman janile. So economic growth means an increase in the value of all goods and services produced in an economy. Value of all goods and services produced in an economy, or what we produce, that must be qualitative in nature. And service produced valuable for all the people, for all the regions, and the sum total of all goods and services in an economy is termed as gross domestic products. GDP जोडो आमे कहउचंती ग्रॉस डोमेस्टिक गोटे देशर जोग्राफिकल सराउंडिंग भितरे जो समग्र उत्पादन होई थाए, गुड्स सर्विसेस जा उत्पादन हेई थाए
ताकू कहा जाए समग्र मोट जातीय आय बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ताल ग्रॉस डोमेस्टिक बा जीडीपी कोठू आसी थाए ना समग्र देशरू जो तीनोटी क्षेत्र आमे जोटा आलोचना कले वेरी बिगिनिंग that is primary sector, secondary sector and tertiary or service sector. The total output held from primary sector, from secondary sector, from service sector are titled as the GDP or gross domestic product. मोट घरोई उत्पादता कहा जाए घरोई उत्पाद. So development as is a sustainable improvement in material welfare, particularly for those who are poor and afflicted by poverty, illiteracy, and health. So growth is therefore a sustained expansion in the productive capacity of an economy, leading to sustained rise in GDP. So sustained, the continuous rise in production in qualitative way, and there is value of GDP will be appear to grow and have a positive impact to hike the national income. That is sustained growth of all the resources will be held possible in the country, that will have a very good impact to hike the national income. So both growth and development are essential for the country's economy. How to the country's economy will grow, that must be focused by the government of a country and make a planned strategy to grow the country's economy. So under development से भली अविकसित राष्ट्र बा विकास न होइथिबा राष्ट्र गुडिक तार सब characteristics feature कौन है पारे. So how can we define the underdevelopment situation for a country? So mass poverty. Underdevelopment indicators होउची the mass poverty, बहुल परिमाण रे दारिद्रता देखा जाउतिबो, low levels of income, concentration of income in a few hands, high levels of unemployment and underemployment, poor nutrition, health, housing, literacy and welfare issues, and predominance of the primary sectors. So low status of women, ये गुडिक सब होउची हमर अंडर डेवलपमेंट बा अविकसित राष्ट्रर आमर फीचर्स बा वैशिष्ट्य. सो ये गुडिक सब दारिद्रता, निरक्षरता, माल न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रेन एंड पीपल एंड लाइक हाउसिंग फैसिलिटी नथिबो, मॉडर्नाइजेशन नथिबो, लिटरेसी रेट अधिका नथिबो. सो ये गुडा सब होउची हमर अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर. सो जेतबेले इंडिया जब स्वाधीनता हासिल कला से देशर अवस्था अंडर डेवलप्ड सिचुएशन थिला. सो इंडिया वी कैन टाइटल नाउ ए डेज दैट इंडिया इज बिलोंग्स टू डेवलपिंग कंट्री. विकास पथरे आगे चली संपूर्ण विकसित होई नाही. इंडिया संपूर्ण भाव रे डेवलप्ड कंट्री बोली परिगणित होइनी विश्व रे. सो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस, इटाली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, China, Japan, all these countries are belongs to highly developed countries. And some of the theories for development, like Rostow strategy of growth, it is short question. What is Rostow stage of growth? Rostow is an American economist. American Rostow, one of the name title are the Rostow stage of growth. One of the American economists and theorists, development theorists. According to him, there are 4 stages of growth. Growth सबुबले 4टा स्टेज देकी जाई थाए. सो ट्रेडिशनल सोसाइटी गोटे थाए जोड़ा पुराना कालिया सोसाइटी जो थे कि डेवलपमेंट ही न थाए, माल नरिस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एवं एई भली नाना प्रकार सिचुएशन, खराब सिचुएशन अर्थनीति देखा जाता है. नेक्स्ट प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, तापर टेक ऑफ नवा पाई गोटा प्री कंडीशंस, तापर प्लान स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हेता है, तापर टेक ऑफ नि. सो लास्ट रे एज ऑफ मास कंजप्शन. तो तापर मास कंजप्शन स्टार्ट हुए to consume different goods and commodities like necessity,
goods commodities like comforts, luxurious goods commodities, because human wants, we can classify in economics that necessary comforts and luxurious human wants. That we can fulfill one after another. So mass consumption will help achieve. So secondly, I would civil theory, that is Lewis theory of development. During 1950s, Arthur Lewis put forward a different theory of development. According to Lewis, underdevelopment countries are characterized by the presence of two sectors. Underdevelopment Lewis kaha कहउचंती ना दुईटी इंडिकेटर थिबो. So that is the traditional rural sector. अति पुराना कालिया rural sector, which is of the nature of subsistence economy, providing for self-consumption within this sector. केवल जहाँ से माने प्रोडक्शन करुथिबे निजे निजे सेही देश बा सेही अंचल ही ताकू उपभोग करथिबो आ सरप्लस किछि नथिबो. So that is the situation, and acute serious situation in economy will automatically prevail. Unemployment, malnutrition, poverty, and there is bad economic conditions, everything, and traditional methods of agriculture and cultivation is held in the country. So all these are aspects of Lewis theory of development. So secondly, the modern urban industrial sector where productivity is higher. The modern urban industrial केवल industrial अंचल urban अंचल केवल modern, by the help of the modern technique, the industry produces goods and services, and rural areas अवहेलित होइकि रही थाए. So that is why Lewis propounded two important concepts on the theory of development. And Gandhian view, आम देशर महाजननायक बा जातीय पिता महात्मा गांधी को भ्यू ताले कौन थिला का ऊपर ना डेवलपमेंट ऊपर. So what is the view? Hello. Yes sir. हाँ कालांदी कौन कहूथलो कि ना सर किसी कोई नहीं. अच्छा okay. So let us listen. कालांदी बुझी परछो तो सर बुझी पारछि जे काली सर जो पोवर्टी क्लास टा करथिले ताको अधार थिला सेटा स्किप कर देला आज जे कोटा कहलो काली सर जो हमरो क्लास हेतिला पोवर्टी रा जो अधार थिला आपण आज सेटा छाड़ देले. हाँ सेटा बा काली सरीला ना सर सरी नथिला. ना सरी थिला ओवरऑल इनकम्प्लीट थिला बोली सर. सुनो डिटेल डिस्कशन टोटल ऊपर करी हबो नाही. गोटे घंटा रे गोटे बुक सारिबा खाली मु सिना तुमको क्लास भलिया पढौची बुझी परला ना नाही सर क्लास. दिस इज योर काउंसलिंग क्लास. काउंसलिंग माने कोन गोटा बही गोटाई क्लास रे घंटा के भीतर कोन कंप्लीट हेई परिबो की ना सर समरी वे पढाउछ समरी करूछंती समरी केमरे पढाउछ समरी आउ clarify about the subject matter, what are the items and aspects are included in different units. खाली काउंसलिंग भल लागो सर भल लागो. क्वेश्चन ने अटेंड करिवो कोन करिवो को भली क्वेश्चन पैटर्न पडिवो. काउंसलिंग गोटा जस्ट गोटा गिविंग द आइडियाज. किंतु मु कोन करे क्लास भली अनेक ताको पढै चले हैला पिला टिके क्लैरिफाई हेई परिबे इत्यादि इत्यादि. तेणु गोटाई बही की जदि आमे ये जो तमर फर्स्ट ईयर टा दिया जाइछि मात्र 6टा पीरियड से 6टा पीरियड रे सबु बही सारिबा पई पड़िवो. बुझि परलो कालंदी सर आम पाखर सिलेबस ता सर पन पहुंचनी सेडा का अलगा फैक्टर. हेलो आज्ञा सर सिलेबस इत्यादि आज्ञा सर हां सर सिलेबस इत्यादि तुम एठू बुझिबो सेंटर रु बुझि पैला ना ना तो जोटी हम तो सर डीडी कॉलेज ओठे जिबो हमें. हां सेटू सब फोन करी बुझिबो आ को तमर डीडी कॉलेज तो इग्नो आज्ञा
हाँ डीडी कॉलेज बुझिबो कि बास्के बाबू जी अछंती ना क्लर्क बास्के बाबू हाँ सर नंबर ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ हाँ बास बास ताको कंटाक्ट करिवो इत्यादि हैला तेणु ଆଜ୍ଞା करी ଆଜ୍ଞା आमे डिटेल क्लारिफाई करिक डिटेल एनालिसिस करिक कोर्स सारी परिबा नाही आमु खाली ओवरव्यू दवा ପାଇଁ डिस्कशन काउंसलिंग केमति क्वेश्चन पैटर्न इत्यादि कौन कौन सब्जेक्ट सब अछि खाली जस्ट ओवरव्यू दवा ପାଇଁ पड़िबो नचे टोटल कोन आ पढै हबो कि टोटल पढैला बेलकु गोटाई बही भी 6टा क्लास रे सरीबो नाही गोटाई बही 12 दिन लागि जिवो दर 12टा पीरियड दरकार पड़ लागि जिवो जदि रेगुलर क्लास होए माने फिजिकल मोड रे बुझ परछ ना नहीं ଆଜ୍ଞା फिजिकल ସାର୍ मोड रे तेणु जेतिकी आमर ऑनलाइन रे लर्निंग प्रोसेस हम सेतिकी डिस्कशन करिबा तथापि मु इलाबोरेटली भी डिस्कशन करि दउची इलाबोरेटली ନା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି So ସାର୍ let ଭଲ us ଲାଗୁ ସାର୍ हाँ लेट अस लिसन गांधीयन व्यू ऑन डेवलपमेंट महात्मा गांधी की तो समस्त जानिछ जातीय पिता सो व्हाट इज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी Mahatma Gandhi's view was very important for the rural development. Mahatma Gandhi title India lives in villages. Bharat ଥାଏ. So Mahatma Gandhi giving importance on rural development. So ग्राम्य शिल्पीकरण बा ग्राम्य उन्नयन उपरे महात्मा गांधी गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला तांकर मतामत थिला रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ही गिवन प्रायोरिटी ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्राम्य शिल्पीकरण उपरे से विशेष कर इंपोर्टेंस देथिले सो सेथि पई से कोन करिथे गोटे एग्जांपल हाते काटी कुटी खाओ चरख प्रथा प्रचलन करिथिले सेथि पई सो हाउ दी रूरल villages the scattered small scale industry like cottage industry handicraft sericulture aquaculture the family members will involve and the per capita income of the family members will increase. If the per capita income of the family members will increase, then village income, village economic will grow. If village economic will grow, that will have a very good impact to high grow the national income. महात्मा गांधी सेति पाई कहउतले ग्राम्य शिल्पीकरण उपरे गुरुत्व दबा गाँ रे जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन होची कपा आखु इत्यादि एवं झोट चाष करिबा महुमाछी पालन करिबा एवं हस्तकर्म करिबा एवं तंत बुणा करिबा ए सब होची ग्राम्य शिल्पीकरण रो इंडिकेटर जदि गाँ गंडारे छोट छोट शिल्पोद्योगी सब सृष्टि हेबे ताले गाँ रे एंटरप्रेन्योर उद्योक्ता माने बाहरिबे क्षुद्र क्षुद्र उद्योगी जदि बाहरिबे जे भली चाइना रे हम जानुचंती वर्तमान गाँ चाइना रे इकोनॉमिक ग्रोथ काहे की हेची ना क्षुद्र उद्योगी सेठी बेसी अछंती तेणु करी महात्मा गांधी कहउथले गाँ गंडार जदि शिल्पीकरण करा जाई परिबो क्षुद्र उद्योगी माने सृष्टि हेबे ताहाले समग्र भारत शिल्पायन होई परिबो तेणु गाँ रे जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होची सेटा सेठी यूटिलाइज होई परिबो the output we can supply to the urban area एवं गाँ रो शिल्पीकरण हेले कोन आउ हे परिबो मॉडर्नाइजेशन हे परिबो the connectivity road will be held possible from urban area to rural area जदि गाँ गंडा अंचल छोट छोट शिल्पोद्योगी सृष्टि हेबे ताहाले सहरांचल रु गाँ गंडा को भलो रास्ता जोगाड़ हो परिबो इलेक्ट्रिफिकेशन हो परिबो लिटरेसी रेट बढ़िबो स्वास्थ्य केंद्र स्थापना करा जाय परिबो एवं लोक माने अधिक सचेतनता हो परिबे प्रोडक्ट वी कैन फैक्टर इनपुट वी कैन अप्लाई सप्लाई द फैक्टर इनपुट and produce more and more goods and services and that will supply to the urban area so that the India economic will automatically grow. So महात्मा गांधी कर व्यू एया थिला से बळी मार्क्सियन व्यू कोन थिला मार्क्स कहउतले
have and have not थिला वाला नथिला वाला जो मानक कतरे थिला वाला से माने शोषण एक्सप्लॉइटेशन करितंती तो लेबर क्लास पीपुल लोक मानक को शोषण करिथांती so there must be optimum economic must prevail so power must be given to the workers laborer class of the society because they are the real revolutionary to grow the economy to change the society etc सेही भली मेजर इश्यूज इन डेवलपमेंट रे कौन सब अच्छी एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेटेड इंडस्ट्रियल कृषि रो विकास हेले शिल्प रो विकास हबो कारण एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस फैक्टर इनपुट सप्लाई टू द industrial sector so industrial sector produces factor input also that help to the agricultural sectors like power tiller tractor pesticides manures etc so shilpa ebong krushi paraspara jadito so capital and labor intensive method of production dekho capital intensive methods means production means there are two methods of production mark here is one of the points there are two important methods of production in any country in the world that all the rich country or capitalistic country produces goods and services by capital intensive method all the developed countries produces goods and services in industry by applying the capitalist methods of production but the developing countries like India and like India, Bangladesh, China, like your Myanmar and Sri Lanka, all these countries, specifically India, produces labor and focuses on the labor intensive methods of production. So there are two methods of production. One is capital intensive methods of production, another is labor intensive methods of production. And जदि आमे कैपिटल इंटेंसिव मेथड अप्लाई करिबा प्रोडक्शन सेक्टर रे लेबर विल अनयूटिलाइज जदि आमे पूंजी की गुरुत्व देकर उत्पादन पद्धति आमे अवलंबन करिबा ताले श्रमिक माने व्यवहार हेई पर श्रमिक माने आउ काम पाई परिबे नाही सो कोन हबो देश रे अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी देखा जिवो भारत भली देश जदि कैपिटल इंटेंसिव मेथड बा पूंजी भित्तिक उत्पादन पद्धति जदि आरंभ करा जाए ताले श्रमिक माने छटई हेबे सेठी मेशिन टूल रोबोटिक सिस्टम रे काम हबो तेबे श्रमिक माने छटई हि जिवो जेति कि लेबरर बा वर्कर दरकार होतला आउ दरकार हेबेनी देखो वर्तमान विभिन्न सेक्टर रे प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर हो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो बा सर्विस सेक्टर हो बैंक मानकर देखो केते जॉब फांका पड़ीची कौन कंप्यूटर सब ऑपरेट करूची ऑटोमेशन सिस्टम सब इंडस्ट्री मध्ये सही बोली एग्रीकल्चरल सेक्टर मध्ये सही बोली एवं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बेले से मशीन टूल सब काम करूची आगे जते लेबर माने काम करूथिले आम देश रे आम ओडिसा रे मध्ये रास्ता घाट निर्माण बैंक इत्यादि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र रे जोटी की वर्कर माने बेसी एंगेज होतिले लोक माने किंतु वर्तमान ऑटोमेशन दुनिया रे मॉडर्नाइजेशन दुनिया रे that we are applying also capital intensive methods of production so there is large scale of unemployment and poverty सेति पई बेकारी समस्या अधिका देखा जाउची हम देश रे हम ओडिसा रे जोथ पई बंडेड लेबर बा गोती श्रमिक बाहर राज्य मान को जाईगिरी काम करूचंती तणु करी हमें भारत भली जोटे जनसंख्या घनता पूर्ण राष्ट्र रे केउ मेथड अप्लाई करिबा आइदर लेबर इंटेंसिव or capital intensive methods of production that depends on the economists and planners politicians एमानंक ऊपर निर्भर करि थाए भारत भली गोटे जनबहुल राष्ट्र रे हमें पूंजी भित्तिक उत्पादन पद्धति आपणैबा ना श्रम भित्तिक उत्पादन पद्धति आपणैबा there are two alternatives one is capital intensive methods of production another is labor intensive methods of production but out of these two methods of production which is appropriate for India आम देश पई कोउटा appropriate हबो जदि पूंजी भित्तिक कैपिटलिस्टिक उत्पादन प्रोडक्शन
प्रोसीजर जदि अप्लाई कले ताले लेबर माने यूटिलाइज हे परिबे नाही बेकारी देखा जीवो दारिद्र्य बढ़िबो जदि लेबर इंटेंसिव मेथड अप्लाई करूचंती देन इकोनॉमिकली वी आल्सो बैकवर्ड we cannot able to compete with the developed countries विकसित राष्ट्र सहित आम कम्पिट करिपरिबा नाही we cannot able to produce more and more goods and produce services to meet the market international market demand. So out of these two, which is important for Indian context, we should apply both capital intensive and labor intensive methods of production. In India, भारत रे आमे उभय को प्रोडक्शन क्षेत्र रे इंडस्ट्री क्षेत्र रहू जेकोनिस क्षेत्र रहू आमे पूंजी भित्तिक श्रम भित्तिक को फोकस करबा उचित नचेत इकोनॉमिक डेवलपमेंट नै परिबनी बेकारी बढ़िबे दारिद्र्य वृद्धि हबो बहु असुविधा हबो सेही बळी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट सब आडे हमकु फोकस दबा पई पड़िबो सो हाउ टू ग्रो the economic and social justice will prevail in our country by which the economic development and growth will held possible. So secondly, concept of strategic rural development. So rural development, कौन सब concept है परिबो? The notion of rural development has been conceived diverse ways by researcher ranging from thinking of it a set of goals and programs properly planned and a strategy must be implemented in our country. So given such a view, you may have some important point as primary objectives for rural development. So first one, to improve the living standard by providing food, shelter, clothing, employment and education. So that we can say rural development will help possible. Secondly, to increase productivity in rural areas and reduce poverty. Production ki bhali बढ़िबो कृषि क्षेत्र रे एवं we can eradicate the poverty situation. Thirdly, to involve people in planning and development through their participation in decision making through decentralized of administration. लोकंकर इन्वॉल्वमेंट रहिबा दरकार लोक मानकर जो प्लान हो बा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रूरल अंचल रे गांगंडा अंचल रे लोक माननकु इन्वॉल्व करबा उचित कोटा भलो मंद कोटा अति आवश्यक रूरल अंचल रे से माने ठीक डिसीजन नै परिबे एवं जस्टिस मेंटेन हे परिबो तेनु करी डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रे दे मस्ट इन्वॉल्व लाइक फॉर एग्जांपल PRI पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे 3 टायर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू नो त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था अछि कोन at the district level जिला परिषद so at the panchayat that is block level panchayat samiti so thirdly village level grama panchayat so all these are the 3 tier system of a panchayat raj system or institution in our country. Here directly the peoples are involved and take decisions and specifically priority given to the women candidates. महिला मानन को 30% रिजर्व रखा जाय करी हमर समान को पॉलिटिकली सचेतनता करा जाउची एवं इन्वॉल्वमेंट करा जाउची सेही बळी रूरल डेवलपमेंट रे हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट ऊपर मध्य गुरुत्व दबा उचित कोन कम्युनिटी डेवलपमेंट ना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अछि लोकल लेवल पार्टिसिपेशन इन रूरल डेवलपमेंट तापरे रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रे हमर सब कोन सब रहउची स्ट्रेटजी विभिन्न प्रकार कौशल रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी ये सब स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ various policy parameters to attain the desired goals. Strategy particularly focuses on the parameters and policy to attain the desired goals and dream. अनेक कौशल योजना हमें अप्लाई कले सरकारंकर बा देशर बा गांगना अंचलर प्रकृत ऑब्जेक्टिव ड्रीम स्वप्न साकार हो पारिबो
So, however, there are certain important policies that are common to most rural development strategy. These policies are related to land, technology, agriculture, employment, education, research and extension, and rural institution and agricultural pricing. या उपरे फोकस करबा उचित. एटा केवल पॉसिबल हबो if there will be decentralization, proper decentralization of administration will prevail in rural area, so that all optimum position we can attain. Activities in rural society, as you are aware, mostly relate to agriculture and other allied activities. Particularly rural अंचल आम जानी कृषि एवं सहायक कृषि, मुख्य कृषि, गौणीय कृषि कोटा ना प्राइमरी agricultural items like production of rice, wheat and pulses, oil seeds, vegetables, ये होची मुख्य कृषि आम राज्य रे ओडिसा रे बा भारत रे जोगुड़ा को प्राथमिक उत्पाद फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन करा जाए. ता व्यतीत आमे गांगंडा अंचल उपरे गुरुत्व दबा अलाइड एक्टिविटी सहायक कृषि को गुडी को ना अलाइड एक्टिविटीज प्रोवाइड इनकम सोर्स थ्रू आउट द ईयर, वर्ष तमाम जे कि आय जोगई थाए. ताले से किए ना पशुपालन करिबा लाइक पोल्ट्री फार्मिंग and like गोटेरी, फिशेरी and cow rearing, गो पालन एवं मत्स्य चाष, मेष पालन करिबा, बतक पालन करिबा, कुकुड़ा चाष करिबा, या उपरे मध्य गुरुत्व दबा उचित गांगंडा अंचल रे. ताहाले तांकर वर्ष तमाम इनकम आसी परिबो एवं एहा स्ट्रेटेजिकली वे प्लान्ड वे रे सरकार मोटिवेशन जोगेबा उचित. So improvement in technology available to rural society can have a big impact on them. Technology, modern technology must be applied in rural areas for the increase in output in agricultural sectors. In India, the problem of illiteracy is particularly acute in rural area. The lack of education can act as a constraint in further rural development. शिक्षा होची मूल बा मेरुदंड गोटे गणतंत्र. एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. सो शिक्षा जदि थिबो, सचेतनता वृद्धि हबो एवं लोक माने गांगंडा अंचल रे ठीक विचार करि परिबे किभली आमे अधिका प्रोडक्शन करि परिबा एवं हमर पर कैपिटा इनकम किभली वृद्धि हबो, ये सब ऊपर से माने ध्यान दे परिबे. सो ए स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन collectivization of resources, a strategy based on the regulated capitalistic perspective, a strategy based on peasant agrarian perspective, आ ऊपर सब ध्यान दबा उचित. ताहले हमर रूरल गांगंडा अंचल रो विकास होई परिबो. रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग आधारे रूरल डेवलपमेंट किभली होई परिबो इफ विल इंप्लीमेंट प्रॉपर प्लानिंग एंड टेक प्रॉपर स्ट्रेटजी. Planning came to acquire added significance with the realization that direct measures to eradicate poverty can result only in limited gains. Subsidies, assistance, and special effort for the uplift of the poor and underprivileged are obviously important, but they must not be uncoordinated and add once. In order to add to the productive base of the economy over a long period of planning is absolutely necessary. So planning is provided for the long-term purposes, not short-term purposes. Local area planning through panchayat can be powerful means of bringing about rural development. पंचायत स्तर रे एवं पंचायत समिति स्तर रे, ग्राम पंचायत स्तर रे प्लानिंग करिबा उचित किभली गांगंडा अंचल रे विकास होई परिबो. सो नेक्स्ट हमर यूनिट रहउची कोन रूरल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन एशियन पर्सपेक्टिव. हम एशिया महादेश रे केतोटी तमरे ई ब्लॉक रे कोन अछि एशिया महादेश रा केतोटी एग्जांपल अछि रूरल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रे एशिया महादेश रा तादरु मध्ये गोटे क्वेश्चन आसी थाए. लॉन्ग क्वेश्चन हो, मीडियम शॉर्ट हो, मीडियम लॉन्ग हो, गोटे क्वेश्चन आसी थाए. हमर एशियन सिनेरियो
आमर एशिया महादेश आम जानी मोस्ट एशियन कंट्रीज रिमेन प्रिडोमिनेंटली रूरल बेस्ड एशिया महादेश आमर जी देश रहा एशिया महादेश पर्टिकुलाली ग्राम बहुल राष्ट्र गुड़िक सब अच्छी एशिया महादेश विशेषकर महादेश तेणुक द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हेलो नमस्कार सर टे क्लास करूची ऑनलाइन ने टे क्लास करूची गोटे कथा मन रखि सब देवकुंड मु भूली जिमि देवकुंड सुनो सुनो मु टे क्लास करूची पछर लगेबी हला हौ 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 So the population living in the rural areas of India is large and has changed marginally over the past few decades. As for the most recent available estimates, 2002, the record states approximately 85% of the Nepal population lives in the rural area. 70-80% of the 70-80% Sri Lanka population lives in rural areas. 79% of the people of Lao population lives in rural areas. 76% Bangladeshi people lives in rural areas. So nowadays in India, in our country, that more than 75% lives in a rural area. So how to grow and develop the economy? So Malaysian economic development and planning. Malaysia रो गोटे एग्जांपल हमर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मध्य हमर ए ब्लॉक 2 रे अछि द नेशनल प्लान मालेशिया नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग अछि नेक्स्ट हमर मालेशिया गवर्नमेंट रे विभिन्न प्रकार प्लान रूरल फास्ट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन सेटा गुटे देखिबो सेकंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ताकू मध्य देखिबो करंट प्रोग्राम सो मालेशिया रे सब कोन करा जाउची तांकर 8 मालेशियन प्लान हमर जे भली विभिन्न प्रकार पंचवार्षिक योजना 5 ईयर प्लान हम देश रे इंप्लीमेंट करा जाउची कौ प्लान ने कोन ऑब्जेक्टिव्स रहउची स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करा जाउची देश रे कोन सब का पर फोकस बेसी करा जाउची whether we eradicate the poverty or unemployment or make more industrialization or focuses towards the agricultural development etc in our country से भली exactly मालेशिया रे मध्य से भली विभिन्न क्षेत्र पर गुरुत्व दिया जाउची रूरल डेवलपमेंट पर रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉवर्टी एराडिकेशन मालेशिया रे so training and education mindset change development program मालेशिया रे निया जाउची income generating activities and agricultural development programs land and regional development programs rural community development program एगरा सब लॉन्ग क्वेश्चन तमरा आसीबो मन रखिताओ सेही भली रूरल डेवलपमेंट सर एक्सक्यूज मी सर हां सिद्धार्थ को सर ये मालेशिया प्लानिंग टा इंपोर्टेंट कि हम माने इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हां माने एग्जांपल that the block cited different examples what are the planning strategies undertaken by the government of different countries in Asia ओके सर अच्छा सर हमें विभिन्न एग्जांपल दिया जाउची जे सुना सिद्धार्थ सुना क्लियर कर दउची काहे कि हमर ब्लॉक रे से एग्जांपल दिया गला मालेशिया श्रीलंका अन्य कंट्री गुडा एशिया रे काहे कि एग्जांपल दिया जाउची ना से देश सब कोन प्लान करा जाउची सेटु सब कोन एक्सट्रैक्ट करा जाय कि हम इंडिया रे ताको इंप्लीमेंट करा जाउची कोउटा पॉजिटिव इंपैक्ट पकाई इकोनॉमिक रे डेवलपमेंट पर लोक मानन को ऊपर मोटा मोटी सरकार चाहती पूरा देश रो अर्थनीति आगे नबा पाई बुझेला ना हां सर अच्छा बांग्लादेश रो एग्जांपल ले जाईची इत्यादि ए दि तीनटा एग्जाम रे माने एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ना कोन सी कंट्री रो विषय पचर हां गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसी मु देखि छी बहुत थर क्वेश्चन दे कारण ऑल इंडिया क्वेश्चन हुए ना तेणु गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसी थाए प्राय तो सेही भली रूरल डेवलपमेंट इन श्रीलंका हां थैंक यू से श्रीलंका रे कोन एग्रीकल्चरल रिमेन्स द लार्जेस्ट सेक्टर प्रोड्यूसिंग अबाउट 1/3
of the national product, small sector holders dominate agriculture in Sri Lanka. Sri Lanka madhya, the farmers are maximum, they are dominant to produce more and more agricultural output. In addition to rural economy has a variety of small time activities such as handicrafts, retail trade, कोठी श्रीलंका रे सब एगुड़ा अछि एटसेट्रा हैंडीक्राफ्ट्स अछि, सेरिकल्चर अछि, एक्वाकल्चर अछि एवं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अछि, रिटेल ट्रेड सिस्टम अछि श्रीलंका रे. Because to create mass employment, provide mass employment opportunity to the village people. Considering each different dimension, the rural economic of Sri Lanka, or for that matter, its entire economic certainly does not present the picture of thriving economic in terms of macroeconomic indicators. Jette jaha kale bhi, the macroeconomic indicators do not develop. So that the government of different countries from this point of view should give in priority both to microeconomics and macroeconomics. Khudro khudro udyog सृष्टि करिवा सहित that macroeconomics means fast economic growth madhya planning strategy implement करिवा उचित. So asset based Mahawali development program अछि ओडी श्रीलंका रे अछि, district integrated rural development program अछि आमा देश रे जेमति अछि. तापरे जनवासीय प्रोग्राम अछि, स्मृति समृद्धि प्रोग्राम अछि, रूरल फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अछि श्रीलंका रे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम अछि. तापरे वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम सब कोन श्रीलंका रे अछि, सप्लीमेंटरी फीडिंग प्रोग्राम्स, मिड डे मील प्रोग्राम आम देश बर्तमान इंप्लीमेंट होइछि मिड डे मील प्रोग्राम जानिछो. सो जनरल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये सब श्रीलंका सब करा जाउछि. ये व्यवस्था करा जाई करी गरीब लोक बा गाँ गंडा अंचल लोक मानकु विभिन्न प्रकार अर्थनैतिक सुविधा एवं सेमानकर मानदंड को दृढ़ करा जाउछि. रूरल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश, agrarian system बांग्लादेश रे, that Bangladesh each belongs to underdeveloped countries. Bangladesh belongs to and attaining independence during 1971. Bangladesh स्वाधीनता हासिल कला 1971 रे. Still, so far today is Bangladesh entitled as the underdeveloped countries. कारण सेभली planning strategy, the national figure, leader, politicians have not so far taken and implement take strategy for the economic development. And selling Bangladesh रे agrarian reforms बा कृषि क्षेत्र रे कोन सब रिफॉर्म करा जाउ. एक्सक्यूज मी सर मोर फर्स्ट क्लास आज कि मु किछि भी बुझी पारनी, कांसेप्ट किछि क्लियर होनु. बुझी पारु ना ना सर मोर फर्स्ट क्लास आज. फर्स्ट क्लास हेले मु कोन करिवि, तमा आगुर तो 22 तारिख रु क्लास स्टार्ट हैला ना. 22 तारिख रु आज की 3 दिन हैलानी, 3 days you have been completed today. सर प्रोवर्टी सर हम तो गोटे यूनिट जाय जे का सेकंड ब्लॉक रे पड़छ हैं. सर मु कोन कहतली प्रोवर्टी एलिटमेंट ना इकोनॉमिक कोर्स कोन स्टार्ट होछि कुछ बुझी पारनी. कालादी कोन कहथलो को सर एटा ब्लॉक वाइज तो पढ़ा होछि, हमर फर्स्ट ब्लॉक रे जायछला एटा सेकंड रे पढ़ा होछि. हां सेकंड ब्लॉक हां सर आज्ञा सर. थैंक्स. ब्लॉक 1 राइट, सेकंड ब्लॉक टुडे विल कंप्लीट. हाँ सर सेकंड ब्लॉक थर्ड यूनिट पढ़ा होछि. हां थर्ड यूनिट. थैंक्स सर. अच्छा रेगुलर क्लास अटेंड कल हबो ना, नल किमिति कोन करबा बुझि परलो. फास्ट आसले आगुर कोन पढ़ाई छी, कोर्स कोन अछि तो सब जानिबो केमिति. ठीक से बोली रूरल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश लाइक IRDP स्कीम अछि, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अछि. तापरे दी थाना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, अदर IRDP स्कीम, रूरल वर्क्स प्रोग्राम एवं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, द ग्रामीण बैंक, ये सब बांग्लादेश रे एगरा सब अछि बांग्लादेश रूरल डेवलपमेंट पाई. तेणु आ उपरे सरकार नुआ नुआ प्लान स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करि थांती बांग्लादेश रो रूरल डेवलपमेंट पाई. सेति पाई सेहि बेला स्कीम मध्ये आम देश रे भारत रे मध्ये सेगरा सब रहउछि. नेक्स्ट जिबा में रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया.
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन सब देखा रूरल डेवलपमेंट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम the community development program CDP is the first major rural development program launched after independence in October 1952. Community development CDP program are to secure total development of the material and the human resources in rural areas. Secondly, to develop local leadership and self-governing institutions. Third, to raise the living standard of the rural poor by means of rapid increase in food and agricultural produce. Fourth, to ensure a change in the mindset of people, instilling in them as a mission of higher standards. So these are the important aspects of community development. The government will focus on to provide and take strategy, implement plan to fulfill the necessity of the rural people. जदि आमर necessity wants को जदि fulfill करा जाए and the people in rural area people will feel comfortable and then the desire to work, willingness to work will automatically increase. If the people are unfed, balanced nutrition unable to get, so demotivation will come to exist. So how the people will motivated towards maximize the production and the output in agricultural sector? If properly the people will nourish and plan strategy and the comfortable facilities will be provided by the government like credit facilities, etc. And like the modern technology, power tiller, tractor, pesticides, insecticides with minimum rate of interest, the government will provide so that the farmers will be motivated to produce more and more, and the surplus food grains can be produced, supplied to the deficit areas, specifically to urban areas, and the proper price, selling price must be provided to the farmers. Otherwise, the farmers will become loser. So, main achievement of CDP programs like the organized administrative setup was established at the national level, state and district, block and village levels. Provide proper justice in this respect. Development was considered to be people-centric. Due recognition was given to the importance of planning and interdisciplinary approach to development. Recognition was also given to recruitment of trained personnel, introduction of technical and technological inputs. It introduced modern technology in agriculture, because modern technology, if we will not apply in agricultural sectors, that output will not achieve to fulfill our target, because population explosion are going on, and due to monsoon gamble, मौसम बायर जुआ खेल, तेणु किभली विभिन्न अंचल मान स्वल्प जलसेचित अंचल किभली अधिका प्रोडक्शन हो पारिबो. सो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैक्टर इनपुट्स and motivated to the farmers, and the modern technology must apply in agricultural sector to produce more and more food grains like rice, wheat, pulses, that and oil seeds, etc. खाद्य धान, गहम एवं रबी जातीय फसल एवं विभिन्न प्रकार वेजिटेबल्स ये सब प्रोडक्शन पाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी मस्ट बी अप्लाइड लाइक पावर टिलर, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कारण आ द्वारा आम प्रोडक्शन प्रचुर परिमाण रे करि परिबा, बिकॉज ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वी अनेबल टू फुलफिल द food grains demands of the people, by which we are importing like wheat from foreign countries. And that is why green revolution phase given importance during 1966 आम देश रे जोथि पाई सबुज विप्लव आरंभ होइतला 1966 मसिया. 1961 रु 66 मसिया रे
जो सबुज विप्लव ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट है कौन पाई ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आर गोइंग ऑन सो फार टुडे आल्सो ए पर्यंत सुधा भारत रे जनसंख्या क्षिप्र भाव रे वृद्धि पाई चली सो एडिशनल माउथ एडेड इन आवर सॉइल तेणु करी ये खाद्य शस्य विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य किभली चाहिदा मेंटा जाई पारिबो सेथि पई सबुज विप्लव 1966 रे प्रथमे प्रचलन करा गला सो सबुज विप्लव फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी like power tillers, sowing machine, tractor, insecticide, pesticides and HYV type of seeds. HYV seeds means high yield variety seeds. अधिक अमलक्षम बिहन प्रयोग माध्यम रे गोटे स्वल्प अंचल रे इरिगेशन जलसेचन माध्यम रे प्रचुर खाद्य शस्य उत्पादन करबा को कुआ जाय सबुज विप्लव सो जेतेबेले 1966 रे when सबु ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च्ड कौन है तार प्रभाव कौ को राज्य रे विशेष करी पड़िला दैट द ग्रीन रिवोल्यूशन फेल दैट इम्पैक्ट डू नॉट fall on the eastern part of this country particularly the green revolution have a very good impact positive impact fall on the western part of the country like Punjab Haryana Gujarat Maharashtra उत्तर प्रदेश सम पार्ट्स यही राज्य मानकर सबुज विप्लवर प्रभाव प्रॉपरली पड़ीला ठीक भाव में पड़िला जो पंजाब हरियाणा रे प्रचुर परिमाण रे व्हीट प्रोडक्शन करा जाउची सारा भारत को सप्लाई करूची राजस्थान रो भरतपुर गोटे जगह अछि भरतपुर बर्ड सेंचुरी जोठी अछि जानिछ सुनिथिबो जे ऑयल सीड्स लाइक मस्टार्ड ऑयल सोरिष चाष होउची प्रचुर परिमाण रे मस्टार्ड ऑयल आम ओडिशा रे आगे जेते आमे देखुथिले सबुज हळदी प्रांतर देखा जाउथला शीत दिने सोरिष चाष होउथला गहम चाष होउथला विभिन्न प्रकार रबी फसल होउथला एबे आमे देखिबा पई पाउचंती गांगंडा अंचल रे विभिन्न नदी अववाहिका अंचल रे बिल्कुल आउ नाही ताले भेजाल काई के होची फूड अडल्ट्रेशन काई के होची वर्तमान लोक माने विभिन्न प्रकार रोग काई के गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर सुगर वर्तमान घरे घरे पेशेंट काहे की ड्यू टू फूड अडल्ट्रेशन केते प्रोडक्शन होची राजस्थान भरतपुर अंचल रे गोटी अंचल रे प्रचुर परिमाण रे मस्टार्ड ऑयल चाष होची सारा भारतर 130 कोटी रु ऊर्ध्व लोक को जोगाण करा जाउची आउ का भा अन्य राज्य रे कोठी किछि प्रोडक्शन होथिबो नो डाउट किंतु मैक्सिमम प्रोडक्शन होची राजस्थान भरतपुर रे ऑयल सीड्स दैट सबुज विप्लव ग्रीन रिवोल्यूशन is the indicator to produce maximum wheat in Punjab, Haryana and oil seeds in Rajasthan. So, due to shortage of the food grains, adulteration is there. जोथ पे घरे घरे कहीं केते माने विभिन्न प्रकार रोगाक्रांत गैस्ट्रिक देखिबो अल्सर कैंसर एवं डायबिटीज केवल खाद्य फूड अडल्टरेशन आज इंजेक्शन दबा 2 दिन पर देखिबो गोटे लाउटाई एते बड़ हो जाइथिबो गोटे कखरटाई एते बड़ हो जाइथिबो बा विभिन्न प्रकार परिबा को कोन करा जाउची कलरिंग कर दिया जाउची केमिकल दिया जाई कि ताको सतेज भली देखा गला भली हमें बाजार किनुचंती ये सब जो विपदजनक घटना काहे होची ना फूड क्राइसिस पाई सो सेही भली सोशल प्रोग्राम हम देशर सब डेवलपमेंट फॉर पुअर फार्मर्स कोन सब अछि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम डीपीईपी प्रोग्राम जोटा कहती डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी प्रोग्राम कहती तापर अछि हमर सब एई भली सब विभिन्न प्रकार प्रोग्राम तापर अछि हमर आईआरडीपी प्रोग्राम अछि ट्राइजिम प्रोग्राम अछि ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अछि तापर वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अछि लाइक एनआरईपी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से भली रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आरएलजीपी प्रोग्राम अछि तापर
समृद्धि योजना अच्छी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम अच्छी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम अच्छी यही भली सब विभिन्न प्रकार प्रोग्राम अच्छी तापर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अच्छी ये सब आम देश रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम सरकार हाथ को नहीं तेणु आ भितर सब युड़िक सब पढ़ ठीक भाव में आज लंग क्वेश्चन सब आसो सर्ट क्वेश्चन आसो मीडियम सर्ट आसो जेते मु आगुरु कही प्रथम क्लास रे जे लंग क्वेश्चन लिखला बेले ठीक प्रॉपर्ली क्वेश्चन को ठीक जगह पोस्टिंग करिवो एवं जोड़ा पॉइंट थिवो ताकू ठीक अंडरलाइन करी कलरिंग करी लिखिवो हला प्रति पॉइंट को गोटे लेखा पैराग्राफ करी एलाबोरेशन करिवो तापरे नेक्स्ट मन रखी था वेरी वाइटल पॉइंट एग्जामिनेशन पेपर रोलिंग पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड कला बेलू तीनटा छाड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करिवो यू कैन सिक्योर वेरी गुड मार्क्स खाताटा भलो भाबे सर क्लियर हेलन टिके आउ दे कोन सर 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 आउ थरे कोन हां बुझेला जे हमर एठू इग्नोर आसलानी तो इंडिकेशन जे क्लास तथे मु कहि दोछि जेतबे परीक्षा खाता अटेंड करिवो गोटे क्वेश्चन जेतबे सरी गला आंसर बुझ पाइला ना नै बुझि परछ हेलो आज्ञा सर हां सर आज्ञा सर हां सर हां नेक्स्ट क्वेश्चन जेतबे अटेंड करिवो आंसर अटेंड करिवो दीटा तीनटा लाइन छाड़ी देबो टिके गैप दे देबो खाताटा टिके माने अच्छा हां सर देखा जीवो क्लियर देखा रोलिंग का जदी एनजे के लिखि देलो हैं रोलिंग खाता से हां रोलिंग पेपर अछि हां रोलिंग खाता अच्छा तापरे प्रति क्वेश्चन अटेंड कर सला परे टिके गैप दबो मझरे मझरे देले वैल्यूएशन बेले सेटा टिके पॉजिटिव इंपैक्ट पकाय एग्जामिनर के ऊपर मार्क ता भला आसे एटा टिके फंडामेंटल जिंस पिला मन ये एग्जाम हो हैं सर केते मार्क रे एग्जाम हो एग्जाम अछि 100 मार्क्स अछि 50 मार्क्स अछि तमर सब्जेक्ट अनुसार हला सब्जेक्ट अनुसार 3 आवर्स अछि सेगडा परीक्षा बेले ये करिवो बुझेला ना नै आ गोटे कथा मन रखो जे मोर कहबार कथा होची जे एई जो हमर ब्लॉक गुडी को पढुचंती बा काउंसलिंग होची काउंसलिंग माने कोन तमर भलो मंद कथा बुझिबा ता माने न जे सब्जेक्ट को एलाबोरेटली पिला मानन को टीचिंग करिबा बुझि पाइला ना नै किंतु मु कोन करे पिला मानन को ओवरव्यू देई करी टिके एलाबोरेशन करी करी विभिन्न एग्जांपल देके बुझाई दिए जेति कि मोर पारु पर्यंत संभव एटा जानि थाओ हला आपन सर केउ धरु कोन बिलोंग्स करचंती कि हैं केउ धरु सर डीडी कॉलेज रे आपन ई करचंती कि हां हां मु प्रतिबारी तमरा केतरा बैच गलानी ऑनलाइन क्लास आरारी